ओके नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं इतना बहुत है नहीं एडा कोई चक्कर नहीं है एडा नहीं एडा का कोई चक्कर किसी ने ऐसे नहीं किया मैं भाई ना सुते पे होने रात ਨੂੰ चलो करना शुरू शुरू करने लगा है बस तुम कर लियो तुमने देखा पहला तुमने लावा कोई ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਨ ਲੱਗਾ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ठीक है ओके ओके ठीक है आंटी जी भैनों ने भी कह दो अपनी कदी अच्छा ओके ओके चलो मैं जान लगा कमेंट कर दो आंदे सारे दो तीन नमस्ते दोस्तों मैं हूं हरमीत आज आपका होस्ट और हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टॉक मार्केट की भी स्टॉक मार्केट की लास्ट हफ्ते क्या हुआ और आने वाले टाइम में हमें क्या देख सकता है पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ स्टॉक मार्केट में और इंडिया में भी थोड़ी बातें करते हैं स्टॉक मार्केट थोड़ी रेड में रही 1% लगभग निफ्टी 50 गिरा लास्ट वीक में और मेन रीजन थे कि इसराइल में जो वॉर लगी उसकी वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ स्टॉक मार्केट में इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया और ईरान के काफी मिनिस्टर वगैरह मर गए हैं तो अब ईरान रिटेलिएट करने की सोच रहा है जिससे कि काफी भारी गिरावट हो सकती है अगर ईरान ने भी रिटेलिएट करा और ये वॉर आगे बढ़ी तो उसमें काफी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं
मैं 1 मिनट कैमरा ठीक कर लूँ। मुझे लगता है कि अभी बात नहीं टलने वाली। अब वीकेंड तक पता लगेगा कि क्या होता है। ईरान कैसे रिटेलिएट करता है और मार्केट पे क्या असर होता है। अगर तो वॉर बढ़ी तो निफ्टी 50 और इंडिया की मार्केट भारी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अगर अमेरिका ने इंटरफेयर करा, इंडिया ने भी इंटरफेयर करा और उन्होंने थोड़ी टेंशन्स कम कर दी, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट फिर रिकवर करके अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश करे, जो कि निफ्टी 50 पे था 26,200 कुछ और अभी वो चल रहा है 25,000 पे। तो 1000 पॉइंटों का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वॉर के लगने से जैसे कि आपको पता है इज़राइल, मिडल ईस्टर्न शहरों में, देशों में अ, ऑयल वगैरह काफ़ी जनरेट होता है, तो ऑयल की कीमत बहुत बढ़ गई है। 5% लगभग कल ऑयल ऊपर था और बिटकॉइन भी काफ़ी गिरा है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है। अब वॉर लग रही है तो अनसर्टेनिटी तो आएगी, डर का माहौल होगा। डर का माहौल होगा तो स्टॉक सेल होंगे। ये बहुत माइनर सा पुल बैक है, तो अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो उनको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उनका रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अगर आपको कोई स्टॉक वगैरह पूछना है या कोई जनरल क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। और एक और बहुत बुरी खबर जो एयर क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। रेस्ट इन पीस टू ऑल द पीपल हू लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट एयर क्रैश। मैंने तो ये ऐसा पहली बार सुना है कि एयरक्राफ्ट इतने बड़े लेवल पे क्रैश हुआ और इतने ज़्यादा लोगों की जान गई है, पहली बार। बहुत बुरा लगा सुन के। अब तो जिनको फ्लाई करना है उनको भी मतलब 10 बारी सोचना पड़ेगा। बहुत डर लग रहा होगा लोगों को एयरक्राफ्ट में फ्लाई करने के लिए, मतलब वैसे एयर स्पेस में। तो क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिससे कि लोगों के दिमाग में डर पैदा होगा। एयर इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी खराब हुई है। बोइंग की रेपुटेशन काफ़ी खराब हुई है। बोइंग पहले ही काफ़ी अंडर प्रेशर था। जब कल्पना चावला भी गई थी, उन्होंने भी बोइंग के बारे में थोड़ा बोला था कि उनका उनको अच्छा नहीं लगी उनकी सर्विस, उनके एयरक्राफ्ट्स में सेफ्टी नहीं है उतनी और उसकी वजह से बोइंग का भी स्टॉक काफ़ी प्रेशर में आया था। थोड़ा बोइंग के स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब और प्रेशर में आया क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की भी स्टेटमेंट थी कि ये कैसे हो गया? मेनली जो उनको लगा कि मेरे को लगा उनको पावर ऑफ जो इंजन की पावर थी ना, वो नहीं प्रॉपर्ली वर्क करी। जैसे ही वो उड़ा, वैसे ही प्लेन नीचे गिर गया। मतलब नॉर्मली क्या होता है क्रैशेज़ की प्लेन ऊपर जाता है, थोड़ा अगर ऊपर कोई दिक्कत हो तो पायलट ट्राई करता है लैंड करने की, बट इस केस सिनेरियो में पावर ही नहीं मिली इंजन से, तो वो प्रॉपर्ली टेक ऑफ ही नहीं कर सका। जब वो टेक ऑफ ही नहीं कर सका तो उसके बाद पायलट के हाथ में कुछ नहीं बचा। जब पावर ही टर्न ऑफ होगी, उसका सारा कंट्रोल चला गया और वो अभी फ्यूल अप होके निकला था और जैसे ही वो नीचे वो मेडिकल कॉलेज में जाके गिरा, तो वो ब्लास्ट हो गया क्योंकि उसमें फ्यूल ही पूरा था। वो भी बहुत अनफॉर्च्यूनेट बात थी। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा-सा अपना स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं। बोइंग की बात कर रहा था मैं, बोइंग के बारे में बात करते हैं। बोइंग का स्टॉक काफ़ी प्रेशर में आया होगा।
ये देखो बोइंग का स्टॉक लगभग 5% गिरा लास्ट वीक उस इंसिडेंट के बाद। बोइंग के स्टॉक में भी काफ़ी प्रेशर पड़ रखा है, 200 के लेवल पे आया हुआ है। रिसेंट थोड़ा पुल बैक था बट अब फिर गिर रहा है। मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। एक टाइम पे 300 के लेवल पे था और मेरे को लग रहा है ये पहले तो काफ़ी हाई कर रहा था क्योंकि बोइंग का कोई बड़ा कंपटीटर नहीं है, सिर्फ एक एयरबस ही है। तो बोइंग का नाम तो काफ़ी मशहूर है और जो उनका प्लेन था वो भी काफ़ी मतलब सेफेस्ट माना जाता था, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन्स। बट ये दुर्घटना हुई, एयर इंडिया का नाम खराब हुआ, बोइंग का नाम खराब हुआ, तो इसकी वजह से कि बोइंग का स्टॉक काफ़ी गिरा। 2020 में एयर इंडिया सरकार ने टाटा मोटर्स को दी थी। टाटा मोटर्स ने सब सारी फैमिलीज़ को लगभग 1 करोड़ रुपए डोनेट करने की बात करी है। बट अब जिनकी जानें चली गई, जिनके फैमिली मेंबर्स चले गए, मुझे नहीं लगता कि पैसे से वो कभी भी कमी पूरी हो पाएगी। बट हैट्स ऑफ टू देम टाटा की चलो इतना भी कर रही है। थैंक्स रवि कुमार जी। और बात करते हैं इरेडा। इरेडा की बात करते हैं, बहुत पॉपुलर स्टॉक है अमंग इंडियंस। इस वीक में प्रेशर में आया, लगभग 4% 5% गिरा इरेडा भी। 300 के लेवल से 167 के लेवल पे आ चुका है। बहुत प्रेशर में है इरेडा का स्टॉक भी। इरेडा की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मैं 2 मिनट स्क्रीनर डॉट इन की स्क्रीन शेयर करूँ। इरेडा मार्केट कैप है 50,000 करोड़। स्टॉक पी है 27 की। आरओई 18%। सही है, आरओई तो बढ़िया है। स्टॉक पी भी बेटर है। मार्केट कैप भी बड़ी है तो मतलब बड़ी कंपनी में आते हैं। डेट काफी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 6 की है। तो यहाँ से पता लगता है कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है। स्टॉक भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है पिछले 1 साल से। यहाँ कॉन्स में मेरे को लग रहा है डेट की बात करी होगी। ये देखो, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब है कि जो कंपनी पे डेट है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपनी प्रॉपरली पे नहीं कर पा रही, तभी उनकी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अगर वो इजीली पे ऑफ कर पाते तो ये कवरेज रेशियो हाई होती। इससे हमें पता लगता है कि यार कंपनी में कितना भी डेटा है वो अपना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, तो हमें डेट से कोई दिक्कत ना होती। बट अगर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो थोड़ा डेट ज्यादा है और घबराने की बात है। इसलिए शायद रिसेंटली ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। रेवेन्यू वगैरह तो ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। बट डेट बहुत ज्यादा है, अभी उतना प्रॉफिट नहीं उनका बन पा रहा कि वो अपना डेट और तेजी से पे ऑफ कर सकें। ये देखो, नेट कैश फ्लो माइनस में जा रहा है। ये बहुत बुरी बात है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। ये माइनस में आ रहा है और वो भी बड़े बड़े लॉसेस खा रही है, बड़े बड़े लॉसेस। तो आप कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे जो पिछले 6 सालों से बड़े बड़े लॉसेस खा रही है। अब सोचो, दो दुकानें हैं। एक दुकान है जो अच्छा मुनाफा कमा रही है, दूसरी है जो घाटे में जाई जा रही है। तो आप क्यों ही उसमें इन्वेस्ट करोगे जो कंपनी घाटे में जा रही है। रेडा काफी फेमस है इंडियंस में क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी भी है, तो वो कहते हैं रेट की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत है और ये बहुत अलार्मिंग साइंस है। प्रमोटर होल्डिंग काफी हाई है।
बट स्टिल प्रमोटर होल्डिंग से सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग से कुछ नहीं होता, पेपर पे भी प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। अगर आपको और कोई स्टॉक के बारे में पूछना है या कोई जनरल फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखना है या टेक्निकल एनालिसिस देखना है, वो भी देख सकते हैं। एक कमेंट आया, बलदेव, हाउ डू यू योर व्यूज एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टिंग इन द करंट मार्केट सीन है। एसआईपी और लमसम अभी तो जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। पर अगर आपको फिर भी करना है तो आप मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है ना? आवाज तो सुनाई दे रही है, स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही? लेट मी फिगर इट आउट। अपनी स्क्रीन शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ बट क्यों नहीं हो रही? हेलो हेलो, एक्चुअली पता नहीं स्ट्रीम को क्या हो गया था, स्ट्रीम थोड़ी रुक गई थी। क्या आपको सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज थम्स अप दिखा दो चैट में। हाँ, हम कहाँ पे थे? हाउ डू यू व्यू एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टिंग इन द करंट मार्केट। हाँ, करंट मार्केट में तो अभी लमसम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट काफी रिकवर कर चुकी है और नियरली लाइक ऑल टाइम हाई पे है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें निफ्टी फिफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखो हम निफ्टी फिफ्टी पे आ गए। अगर आप देखो लमसम करने की बात कर रहे हो, मार्केट नियरली ऑल टाइम हाई के पास ही है अभी, तो लमसम अभी करने का फायदा नहीं है क्योंकि अगर वॉर छिड़ती है और ईरान भी रिटेलिएट करती है इसराइल पे, तो मार्केट के नीचे आने के काफी चांसेस हो जाएंगे। और अगर आप लमसम करते हो तो आप काफी पैसा लूज कर सकते हो अगर मार्केट 10-15% नीचे आ जाएगी, और फिर अगर उसको रिकवर करने में काफी टाइम लग गया तो आपका वो पैसा रिकवर भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं अभी आपको एडवाइस करूंगा कि अभी अगर आपको, अगर वह तो आप मत करो अभी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं तो आइडियली सोचता हूँ कि मार्केट 3-4-5% कम से कम गिरे उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग करनी शुरू करूँ, या मैं अपने फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स देखूं। अगर आपको अभी करनी ही है तो आप एसआईपी लगा सकते हो, पर वो भी कम अमाउंट की, ज्यादा नहीं, लाइक 1000 रुपए पर मंथ। क्योंकि एसआईपी ये है कि आपको अगर मतलब वो वॉर की टेंशन कूल डाउन हो जाती है तो मार्केट में कोई वो नहीं रहेगी, मार्केट में कोई वो डर का माहौल नहीं रहेगा, तो वो मार्केट रिकवर भी हो सकती है। इसलिए आप जितने भी
Hello, can you hear me now? Most probably you're gonna hear me now. I don't know what the issue with the audio, bro. Like last time it was okay, but this time it's just bugging me a lot. No worries. Now back to the topic. Like वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वेट करो कि ये जो अपनी वॉर है वो कैसे पैन आउट होती है। अगर तो वॉर बढ़ी तो मार्केट के गिरने के आसार हैं। तो जैसे अब तब भी आप धीरे-धीरे करके लगा सकते हो। जैसे अगर 5% गिरी तो कुछ अमाउंट लगाई, 5% और गिरी तो ओवरऑल 10% गिरी तो थोड़ी और अमाउंट लगाई। तो वैसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अभी आपको करने ही है तो एसआईपी लगा के रख दो। अगर मार्केट गिरती है तो आपके लिए और बढ़िया है। एसआईपी में आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे उतने ही पैसों में, और आप साथ में लंप सम भी कर सकते हो। पर मेरे को जो लगता है कि मेरे को लग रहा है कि वॉर थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी। यूएस माइट इंटरफेयर, क्योंकि ट्रम्प ने भी कल दी थी ईरान को, कहा था ट्रम्प ने कि फिगर आउट अ वे एंड मतलब डील साइन करो और ये सब खत्म करो, हमें वॉर नहीं चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वहां पे यूएस ने सॉर्ट आउट कर दिया ट्रम्प ने, तो फिर वॉर कूल डाउन हो जाएगी और फिर मार्केट फिर अपसाइड जा सकती है, क्योंकि और कोई अभी दिक्कत नहीं है। तो कोई रीजन नहीं है मार्केट के पास नीचे आने का, अनटिल अनलेस कि यूएस में जो टैरिफ का इशू चल रहा है चाइना के साथ, उनकी जो ट्रेड टॉक्स हैं, अगर वो ब्रोक डाउन होती हैं चाइना के साथ, तो मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है। पर अगर वो गो अहेड होगी, जो ट्रेड टॉक्स है चाइना और अमेरिका की, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है, अपना जो ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक कर सकती है। तो इसलिए अगर आपको करनी है तो ऐसे भी, नहीं तो वेट करके रखो, क्योंकि और स्टॉक के नीचे आने के चांस हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हाँ, जिनको ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स ना लें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे अब प्लेन क्रैश हो गया, तो अब वो किसी ने बोइंग लिया, तो वो सडनली गिर गया। और कई लोग होते हैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं अगर उनका स्टॉक 5-10% गिर जाए या कोई उनका ईटीएफ 5-10% गिर जाए। तो इसलिए अगर जो लोग घबराते हैं, बहुत डर लगता है, वो शुरू करें ईटीएफ से, फिर धीरे-धीरे मार्केट की वॉलेटिलिटी देखें कि कैसे फ्लक्चुएट होती है, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स लेना शुरू करें। प्लीज सर टेल मी हाउ डू यू सजेस्ट समवन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद जस्ट 5000 टू 10000 रुपीस पर मंथ? हाँ, अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपए हैं पर मंथ इन्वेस्ट करने के, तो आप एसआईपी लगा सकते हैं। पर जैसे कि अब मैंने आपको कहा, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस नीचे आने के हैं, बल्कि ऊपर जाने के। तो अगर आपके पास 5-10 हज़ार हैं, आप 1-2 हज़ार की एसआईपी लगा दें पर मंथ, और बाकी जो पैसा बचता है, वो अपने पास रख लें बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, या फिर अगर आपको कोई इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है बैंक से, तो सेविंग्स अकाउंट में रख लें। जैसे ही मार्केट गिरती है 5 या 10%, थोड़ा-थोड़ा जैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, उस जैसे 3,000 आप हर महीने कर रहे हो, साल का 36,000 हो गया। क्या पता साल के बाद मार्केट गिरे, हमें नहीं पता कब गिरेगी। तो जैसे ही गिरती है तब वहाँ 36,000 इकट्ठे डाल दें, और साथ में 2-2 हज़ार की एसआईपी करते रहें। उससे मतलब क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर ही जाती रही तो आपके एसआई में थोड़े-थोड़े शेयर्स बाय होते रहेंगे, और जब नीचे आएगी तो एसआईपी में ज़्यादा शेयर्स बाय होंगे उसी वैल्यू पे। और फिर जब लमसम डालोगे इकट्ठी, फिर तो जब अपसाइड जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। बट लमसम थोड़े ध्यान से डालने होते हैं, क्योंकि कभी-कभी आप डालते हो और मार्केट और गिर जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, और डाल दो, और उससे जब अब सबसाइड जाएगी तो आपको काफ़ी प्रॉफ़िट होगा। और वही पैसे इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में जो आपको कम से कम 3 साल तक नहीं चाहिए। अगर आपको अगले 6 महीने में या घर लेना है, या कोई डाउन पेमेंट करनी है, या गाड़ी लेनी है, वो पैसा स्टॉक मार्केट में ना डालें। क्योंकि पता नहीं है 6 महीने में वॉर लग गई, काफ़ी मार्केट गिर गई 20% और फिर नीचे ही रही 20%, रिकवर होने में कभी-कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चुटकी से रिकवर हो जाती है। कोविड में हुआ, मैं मानता हूँ, बट हर बारी ऐसे नहीं होता। कभी-कभी रिसेशन भी बहुत आए हैं, 2008 का रिसेशन, उसको मेरे को लग रहा है 1.5 साल लगा था रिकवर होने में मार्केट को। तो इसलिए पेशेंस रखें, थोड़े-थोड़े करके पैसे लगाते रहें, और जब मार्केट गिरे तब लमसम इन्वेस्टमेंट करें, और वही पैसे यूज़ करें जो आपको लगभग 3 साल तक नहीं चाहिए।
बाकी अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। जैसे कि मैंने स्टॉक ले लिया इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्टॉक ले लिया, ठीक है? तो इन्फोसिस का अभी स्टॉक चल रहा है 1600 पे। इन्फोसिस की मार्केट कैप है 6 लाख से भी ज़्यादा, 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। स्टॉक पीई है 25 की। स्टॉक पीई का मतलब होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हम कितने रुपए दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। तो इन्फोसिस के केस में हम 25 रुपए दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रहा हूँ स्क्रीनर डॉट इन से। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चलो स्क्रीन शेयर हो जाए मेरी। अगर आपका कोई और जनरल क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एसआईपी का पूछा था। लार्ज कैप और मिड कैप का क्या मतलब होता है? मेनली ये मार्केट कैप से जज की जाती हैं। अब जो बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस होगी, इन्फोसिस होगी, एचडीएफसी बैंक होगी, टाटा मोटर्स होगी, ये है लार्ज कैप कंपनीज। इनका मार्केट कैप काफी बड़ा होता है। जैसे कि इन्फोसिस का है 6 लाख करोड़, रिलायंस का है मेरे को लग रहा है 19 लाख करोड़। तो ये होगी लार्ज कैप कंपनीज। और मिड कैप कंपनीज का थोड़ा कम होता है मार्केट कैप, और उनमें वॉलिटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद आती है स्मॉल कैप, उनका बिल्कुल ही छोटा होता है, वो भी मार्केट में नहीं आई होती हैं। तो उनमें मार्केट कैप आपको काफी कम देखने को मिलेगा और वॉलिटिलिटी भी काफी हाई देखने को मिलेगी। वो छोटी छोटी न्यूज पे काफी फ्लक्चुएट करेंगे। और जबकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। व्हाट एक्सचेंज डू यू ट्रेड? आई ट्रेड इन New York Stock Exchange as well. I trade on Nasdaq as well. I do it on Toronto Stock Exchange as well, and I do it in uh, National Trade in India on NSE. Yeah, because I'm young, so I only do equities. I can take risk. I have a long life ahead of me, so I only do in like ETFs and some good fundamental stocks. But to the individual, like to the new guy, I would suggest that you should diversify. You should also have some in gold, in government bonds, and in equities. Because I'm experienced and I'm young right now, I can take risks, so I just stay in equity. Energy, I don't like energy stocks, bro. They are like dead. Now energy time is gone. I'm in IT and I'm in consumer goods because they are stable. They play quite a good dividend. I'm in banking sector as well. And then I'm in like AI, Nvidia chips, Microsoft who are using, and I can see I'm in Amazon. I'm away from energy stocks. In India, people are liking a lot about solar energy, but I don't find any good companies in there. The big companies, Adani and Tata, they are also not profitable right now. So I'm not
thinking of investing in them anytime soon? What about the Apple manufactured iPhones in India? Uh, Trump recently gave a statement, bro. Like, he doesn't want Apple to manufacture iPhones in India. He want them to manufacture them back in US because he's like more worried about his US economy and markets. Because when he became the president of America, he said that I will promote the US businesses. That's why he want Apple to manufacture iPhones in US. But I don't think so that it will like go ahead. Apple will still manufacture their iPhones in India only. They won't do it in the US. It would be pretty expensive for them, and plus, I think it was more of a political statement that Trump wanted to say. Any other questions you have about finance? You can, or you have any like stocks, specific stocks that you want to ask about. I can do the fundamental analysis and tell you like, is it good fundamentally or not, or is it the right time to buy or no? अगर आपको कोई भी स्टॉक SBI or State Bank of India, yeah, no worries. Let me pull up on screener.in. SBI Life Insurance. मार्केट कैप है 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा. स्टॉक पी इज लाइक 73. That's pretty expensive though. ROE is 15. Dividend yield is nothing. Face value is okay. Okay. Sales growth is good. 21%. Let's go to the chart. Chart is recovering from 1400 to 1800. Nice. Company is nearly debt free because debt to equity is zero. That's good. Let's see the earnings. So the revenue is increasing year by year. It's just decreased from 24 to 25 like last year, but not a big deal. Overall, it's increasing. Operating profit is also high. Bro, the operating profit margins are so low, like only 1-2%.
So that's pretty bad. I won't invest in a business like whose operating profit margin is like 1-2%. I need at least like 15 to 20%. They need to keep the profit in their pocket. They can earn whatever they want, but if the margin is less, they won't keep that much in their pocket. And then I move on to the cash flow. Cash flow is still okay, not that bad. Promoter holding is 55%. FI is 21, 28. Promoter holding is good, but still the OPM operating profit margin is bad. Let me pull up. Who has the best mobile banking? We are thinking of from that perspective that nowadays now people always use their mobile and pay from that. So SBI can earn a lot through that. That's a valid point. I think SBI has the best mobile banking in India, and 90% of the transaction of SBI are digital. So that's a good point. Everything about SBI is good. The only issue I have is about the OPM, like the profit margin. If they can improve that, then you can invest in this company. Like it's a blue chip company, so it won't go like bankrupt. Do you have Apple Pay? Yeah, I do have Apple Pay. Direct and regular mutual funds plan. डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं कि जो आपको बैंक ऑफर करे कि हम ये म्यूचुअल फंड हमने निकाला है म्यूचुअल फंड तो आप इसमें इन्वेस्ट करें बट द इशू विद द म्यूचुअल फंड्स आर द फीस आर सो हाई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड उनकी फीस बहुत हाई होती है जो बैंक अपनी फीस रखती है वो बहुत हाई होती है अ, मैं किसी भी इंडेक्स फंड या ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो पहली चीज मैं देखता हूँ उनकी एक्सपेंस रेशियो क्या है जो अब डायरेक्ट होंगे उनकी लगभग 2.5 से 3% होगी तो या 2% होगी तो मेरे लिए वो बहुत है 2% लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हर्ट करेगा अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हो रेगुलर म्यूचुअल फंड की भी फीस 1 से 1.5% होती है बट वो रिलेटिव उससे कम होती है बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईटीएफ लो। ईटीएफ की तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है, वो एक्टिवली मैनेज होता है, वो पैसिवली मैनेज होता है। जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली मैनेज होता है। एक्टिवली मैनेज होता है इसलिए उनकी वहाँ पे एक बैठा होता है मैनेजर, जो कि आपके फंड को रन करता है, बैंक का मैनेजर। उस वो अपनी फीस रखता है बीच में और जो ईटीएफ होते हैं वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। मतलब वो एक कंप्यूटर है, एआई है जैसे वो मैनेज कर रहा है, जो बेस्ट कंपनीज़ है वो उसको फंड में रखेगा, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ है उनको फंड में रखेगा और जो बुरा परफॉर्म कर रही है उनको खुद ही निकाल देगा। तो एक तरफ आदमी है और एक तरफ कंप्यूटर है, तो मैं तो कंप्यूटर पे डिपेंड करूँगा ज़्यादा कि क्योंकि वो इमोशन से नहीं डिसीज़न लेगा। और दूसरी बड़ी बात है जो ईटीएफ में है वो है एक्सपेंस रेशियो मिनिमम है और जब एक्सपेंस रेशियो कम होगी, कम पैसे आप बैंक को दोगे तो ज़्यादा रिटर्न आपकी जेब में जाएगी। तो इसलिए ऑलवेज़ प्रेफर्ड ईटीएफ ओवर म्यूचुअल फंड्स। बट कई म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रिटर्न आपको दे रहे हैं। आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये जो कि रिटर्न ही 18-20% आ रही है। तो अगर वो 2% ले लें तो 18% आती है बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड आई वुड सजेस्ट ईटीएफ क्योंकि कई ग्रोथ ईटीएफ भी हैं। वो भी 17, 15-16% रिटर्न दे रहे हैं अगर आपको ग्रोथ में ही करना है। और अगर आपको नॉर्मल एनएफटी निफ्टी को आपको करना है फॉलो तो निफ्टी की भी रिटर्न 12-13% तो आ रही है तो नॉट दैट बैड और प्लस सेफ भी है। अगर आपको कोई और भी सवाल है तो पूछ लो।
Which cities have the best real estate investments? Bro, the cities that are growing at a rapid pace, like Mumbai, Delhi, Gurgaon, where like there so many jobs, Bangalore, because there's so many jobs over there. So people are moving to that side of the country and they are buying houses there, settling there. Of course, wherever the employment is, there the prices will rise. So Delhi, also in Chandigarh, the prices are increasing very like at a very pace. Very plus in I think in Mohali, government is funding so many like they are opening up so many societies. So they if government is investing, then people are also investing, and the prices are going pretty high. Can foreigners own land in India? But it depends on if you have the foreign passport. I don't think so. Then they would allow you to buy agricultural land in India. About the real estate land, like real estate, I need to inquire about if you can buy real estate, but I am pretty sure you can't buy the agricultural land. Yeah, the prices are going pretty high for real estate. In Mumbai, it's like out of hand, and now in Mohali, because government is putting in so much money, so that's why the prices are going so high for the houses. Real estate is also a good investment, but in the long run, I think stock market performs better than real estate because house has some hidden cost. US should cancel all Indian real estate purchases. I don't get it. Like why US should cancel all Indian real estate purchases? Like what do you mean by that? Like US citizens, like US should cancel, like put a ban on the US citizens to buy any real estate in India. That's what you're saying. Maybe that's what you're saying. Like Indian citizens who are living in US, like America, US should ban them to buy real estate in India. Yeah, if like foreigners do not buy because they have a lot of money. Like in America, like dollar is like around 80 rupees, 80, 85. So they can invest a lot of money in here and then they can earn rent from there and then they can also sell their house and earn appreciation on that. But the thing is, yeah, you are right. If they invest a lot of money and they are willing to pay more, so they are certainly affecting the real estate prices in India. Yeah, you're right. They should ban the foreigner buyers. I think in Canada recently they banned foreigner buyers to like stop the hype and like stop the increases. The price should not increase, so they're avoiding to put in like foreign buyers, but then the real estate market in Canada just got dead. And then nobody bought any houses in Canada. And then all of a sudden it just went dead. But then they again has to reinstall that thing that foreigners can buy now. And then the real estate market picked up, but now it's suddenly dead because the economy is so bad right now in Canada because of the tariffs from Canada, America, and all that stuff. But India is growing. Like India's economy is good, right? India's not economy is not that bad. It's growing at a pretty rapid pace. So whoever investing in Indian market is getting a good return. But the INR is getting down, I guess. Like the conversion, if you convert, the INR value is going down. Everything is tariffs are pretty bad. Yeah, tariffs are bad for everybody. And Trump certainly scared everybody with the tariffs when he implied tariffs on Canada, Mexico, and then India 26%. That's a lot. And then all of a sudden, governments have to come in. When the governments came in,
They had to stop Trump from putting more tariffs on, and then he put so much tariff on China in like 2 3 days. The issue was so big, and then China China did some like LV brands. They made some clothes and all that stuff. A lot of happened after tariff, and now then the government had to intervene. The companies like big companies, Tesla and Apple, they also talked to Trump. They were so afraid of everything because China is a manufacturing house and India as well. So now tariffs were pretty bad for everybody. Still, there like the market went down a lot because of the tariff, and it recovered very well as well. What is your take on dividend paying stocks versus growth stocks for long term wealth building? I don't invest in the dividend stocks because I believe in growth stocks more. I think the growth stocks, if you buy growth stocks, your portfolio will perform better in the long run rather than the dividend stocks. Because what happens with the dividend stock is they pay a lot of money in dividend and they don't have a lot of money left to invest and grow their business. If they are unable to grow their business, expand their business, they won't be able to increase their market cap and increase their stock price. If the stock price doesn't increase much in the long run, you won't make enough profit. So I prefer going for growth stocks which have good fundamentals. But a lot of people buy dividend stocks, they want some passive income. But I don't. I am young right now, so I don't need any money right now. I can just invest in the market, and then after like 10, 15 years when I want to retire, then I would need money. Then I would apply the 4% rule that I've already explained in my videos. And then after withdrawing 4%, you can just live off that income and enjoy your life. Some people like who are old, they invest for dividend and they like passive income and they want their money secured. They don't want to take much risk. That's my take on the dividend paying versus the growth stocks for the long term. If you want to build generational wealth, you should invest in growth paying stocks. Too much foreigner money in real estate market. Yeah, yeah. So many Canadian NRIs, they come like once in 2 years and then they buy a property and then they put it for rent and then this just earn passive income of it. But the real people who are affecting from this is the people who are living in India. They are unable to buy property from the income they are earning because the prices are so high and the interest rate is so high that you get from bank. I think it's 9 to 10%. Even on real estate, like the mortgages interest rate is so high. Plus now the banks are also giving you like if you even if you pay like 30 40% down payment, they are still putting insurance on you every month. But in Canada, I guess they if you don't put like 20%, then they put insurance on it. If you put 20% down, then there's no insurance. In India, it's like they're ripping people off. It's not a good sign. I preferably don't like to invest in real estate for like passive income like rent or that stuff because I don't want to call everybody anybody like at the first like you have to pay rent. People don't pay rent if you don't call them like 5 times and then they bug you. There's this issue in the house, there's that. These tenants are bugging me and all that stuff.
So I kind of stay away from the real estate. I just bought a house to live for myself. That's all, and for my family. And other than which whatever money I have, I just invest in stocks. Some people tell me like you can buy two, three houses and then put it on for rent and then you can live. Really, I don't like that. It's not like free. I have to go there. I have to manage the tenants. They're not paying. What if they loses a job and they lose a job and then they don't want to leave the house and neither do they want to pay the rent and then you have to involve police and all that stuff. I don't want to take any stress on my mind. Just because from stocks I don't need to call the company like pay me the dividend or I'm selling this capital gains and all that stuff. I want to withdraw my money. I don't need to call my brokerage account. Any other questions you have about the stock market? Finally, I'm able to share the screen. Finally, what is my day job? Which sectors are the strongest growth potential in India? Yeah, manufacturing is one as well, but I would say in India, EV market is also emerging. Maruti Suzuki is going investing a lot of money into EV. So one is EV, manufacturing, AI, Infosys, TCS. These technology companies are also investing rapidly into AI. So these are the sectors. Construction, construction as well. You can say there's a lot of construction. Those companies are also good growth potential and have good growth potential in India. In AI market, you can go for this Infosys, TCS. They have good fundamentals and they are currently trading at good PE as well. So you can look into that. And then in the EV, you have Maruti Suzuki, Tata Motors. These are good companies fundamentally. And then this digital payments is also a good sector to grow in India. It also has a good growth potential and manufacturing as well. Yeah, these are the few sectors that are very strong. Guys, if possible, can you like the stream? Like the stream. It's only 6 likes and 10 people are watching. And if you have any questions, you can just put a comment on. I would be happy to help you, guide you.
Kindly comment what do you think how the stock market is gonna go, like the Indian stock market and the US stock market next week. Best Indian railway to invest in. That's a good question. I just heard a lot of people were talking about Ireda. I need to look on to this company's con IRCTC. I have one company in mind that IRCTC. New stock P is this, story is this, face value is different this. Yeah, this company you can have a look at. IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation. The ROE on this company is like 37%. Massive for a railway company. The growth remains. The growth is immense. And the company is like it's a railway company. The railway companies normally have a lot of debt, but this company has like nearly zero debt. This company is debt free. I saw some railway companies. One company I invested in back in last 2 years, maybe Bill Gates invested in that company, that Canadian National Railways, but they have a lot of debt. And the CEO was also saying that to run a railway line, you need a lot of money and you need to take on a lot of debt. But this company is debt free. And the ROE is also 35%, 37%, so it's good. Profit growth is also increasing like at a good pace, like 20% for the last 5 years. They also pay you 1% dividend. That's like almost nothing, but still okay. The dividend payout is only 50%. The sales are growing. See the operating margin. The operating margin on this company is like 30%. So high. Profits will double if the rope riders had to pay. Cost for what is the PE on this? PE is high. PE is high though. PE is like 48. You said PE, I guess you were asking for PE. The price to earning ratio on this company is 48. The revenue would double, bro. If the roof riders had to pay, oh my god, that would just go off the roof. If the people who are sitting on top of the train, they have to pay. The railway also have a good future in India. People like in big cities like Mumbai, I guess the traffic is so high, so people tend to travel through this. Oh, you are asking about property, plant, and equipment (PP). Oh, the book value you're talking about, okay, on this company is like the stock price is 700 and the book value only says 46. Promoter holding is 62% though, but the book value is so I don't know why it's. I don't think so that it's right, bro. Screener.in it's 46 assets. Yeah, the book value somehow says 48. I don't know why. I've also made a video on top 5 stocks. If you wanna go have a look, I just recently uploaded it. Top 5 stocks to buy right now in India, June 2025 edition. And I also want to say, like now I'm live, so if I on this channel normally I upload videos in Hindi. If you want to see my videos, I have another channel where I upload sort to be a similar content but in English. If you want to subscribe to that channel, I can
Share a link. My view on inflation. Inflation is very dangerous. Let me tell you. Yeah, so my view is inflation is pretty strong, and the inflation is rising a lot nowadays. It's like uh, all over the place, like in India and Canada. Normally in India, it's like 6 to 7%. In Canada, it was used to be 2 3%. In America as well. But now it's increasing pretty high, like around 4 5%. So pretty dangerous for people who are living paycheck to paycheck. जो भी लोग जैसे अपने पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वही खर्च कर रहे हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक हो सकती है। आने वाले टाइम में रेंट बढ़ सकता है, घरों के प्राइसेस जो कि ऑलरेडी बढ़ ही रहे हैं, इन्फ्लेशन और ग्रोसरी के प्राइसेस महँगे हो सकते हैं, तो उससे खर्चा पानी जो लोग पेचेक टू पेचेक चल रहे हैं, बिल्कुल सर पे आ रखे हैं, उनके लिए खर्चा बहुत मुश्किल हो सकता है करना। और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे, आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ पे और आपके लाइफ़स्टाइल पे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे बाहर जाने को, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इन्फ्लेशन इज़ प्रीटी डेंजरस, इट नीड्स टू कम डाउन, बट इट कैन ओनली कम डाउन इफ द इंटरेस्ट रेट्स स्टे हाई। Trump is pretty adamant to bring the interest rate down, but Powell doesn't want to bring the interest rate down because he knows if he brings the interest rate down, then the inflation is going to rise again, and it's going to cause a huge chaos all over the place. In India, the inflation is increasing pretty fast. The income is not rising that fast, but the inflation is pretty high. So that's a concerning sign. Let me see the IRCTC. Look, the stock, the railway stock is coming down from 1100. It came to 770, but the stock good fundamentally. You can start SIP in this stock. Yeah, the capital gains taxes are pretty high as well. Yeah, Apple. Yeah, they do have monopoly. People are, but I don't think so. The monopoly is gonna stay for long because the innovation is like that in Apple. They are not innovating a lot. They're not bringing in new technology. Where other companies they are bringing in good technology, and I think Apple will have a competitor in the near future. And Apple would not be the largest company in the world. Nvidia would take over, or maybe Microsoft take over it. They have iMessage, but still Apple lack
creativity, new technology, whatever new products they are creating, they don't have much difference from the previous ones. Plus, the prices are also increasing. Right now, where the economy is uncertain, people are worried about their jobs. Recession is on their head. I don't think so. They are gonna buy the new Apple. Finally, I can share the screen.